Moving on, the journey of the Bhopal Literature and Art Festival has finally come to the last session of this festival. But मैं आपको बता दूं ये सिर्फ आखिरी सेशन नहीं है. Recording stopped. हाँ मेरी रिकॉर्डिंग अच्छा ओके. इस सेशन के बाद हम सब एक बहुत ही खास पेशकश देख पाएंगे, परफॉर्मेंस देख पाएंगे बाय श्रीमती लता मुंशी जी. तो इस इवेंट के बाद, इस सेशन के बाद कहीं जाइएगा मत. और एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय द वैलेडिक्टरी जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे और कंक्लूजन रहेगा. सो फॉर नाउ द लास्ट सेशन फॉर द फाइनल डे ऑफ द भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2023 is titled as Tribals and the War of Independence, and we are extremely elated to have तुहीन सिन्हा जी with us. जोरदार तालियों से हम उनका मंच पे स्वागत करते हैं. तुहीन सिन्हा जी, and he will be in conversation with Anandita Pan and Shriram Tiwari जी. मैं चाहूँगा वो इस मंच पे आए, तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए. Tuhin A Sinha is a best-selling author, columnist and a politician. He is acknowledged amongst the most prolific Indian writers with a maverick knack to experiment with new genres. Tuhin's recent releases includes a geopolitical thriller, Mission Shehingan, and the first two books of his trilogy around India's unsung heroes, The Legend of Birsa Munda and the Great Tribal Warriors of Bharat. He is also a popular media voice of the BJP and represents the party on prime-time news debates. Dr. Anandita Pan is an assistant professor at the Department of Humanities and Social Sciences, IISER Bhopal. She obtained her PhD from the Department of Humanities and Social Sciences, IIT Kanpur, and her MA from JNU, New Delhi. She researches and publishes in the areas of gender studies, Dalit feminism, and subaltern studies. As the second discussion for the day, we are glad to have Shriram Tiwari ji. He is a poet, critic, and media expert known for his varied interest in literature, art, cinema, and various activities related to procure cultural heritage, promote tribal and folk culture, and to support Indian values, its history, and other forms of art. Tiwari ji has also edited and published more than 100 books based on literature, art, cinema, Indian freedom struggle, and Swaraj. मैं चाहूँगा हम इस आखिरी सेशन में थोड़ी जानदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें. सेम एनर्जी होनी चाहिए एंड मैं निवेदन करूँगा कि एक बढ़िया शुरुआत करी जाए इस आखिरी सेशन की. किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है. भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी. वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी.
I hope I'm audible. So we have with us Tuhin Sinha, who is a well-known writer, and he has been writing quite a lot on the tribal movements and noted authors and noted figures in tribal movements. So my exposure to Tuhinji's books have been very interestingly, he has written already 2 books, and as I have noticed, his trilogy, the 3rd installment of his trilogy will be out in June this year. So many congratulations, Tuhinji. Absolutely. So we are really looking forward to it. I would like to start off this session by, asking you to shed a little bit more light on your first book itself, Birsa Munda, and what motivated you, and how has that journey been in general? Yeah. Well, good evening, everybody. It's a pleasure to be in Bhopal. So I grew up, like Bhopal, I grew up in a small town called Jamshedpur. And like Bhopal, outside of the city, even Jamshedpur has lots of tribal hamlets and lots of tribal settlements. Now, in our growing up days, while we would find the statue of Birsa Munda, every few kilometers within the city, and while there would be curiosity to know more about the icon, unfortunately, not only was there dearth of information, but also it was not considered fashionable to even talk about him. So, in fact, a few years ago, 2014 onwards, when the present establishment started talking about it, there was a fresh interest in India's subaltern freedom movement. And I have been an author from 2006, and I've written multiple genres. So I think I was grappling with a situation where I needed some fresh, a fresh narrative to work on. And Birsa Munda had been on my mind from 2015-16. Now the onset of the pandemic turned out to be a blessing in disguise, because due to paucity of time, I had not been able to invest adequately on the research of a subject like this. But when, the first lockdown happened, I realized that I won't find a better opportunity than this. There were for at least 2 to 3 months, everybody was locked inside the house. And I just, there was somebody who was in touch, another author, Ankita, who wanted to work together, and she also has written a couple of books independently. I said, this is the time, let's just start on it. So I think the first draft, along with a fair amount of research which I had done prior to the onset of the pandemic and all of that, I think by July 2020, the first draft was ready. And then obviously, like it happens when a book is quickly written, I decided to rewrite entirely, which took another year. And then it came out. So, but then, it happens most of the time when you choose a subject as big as this. I realize that there's an ocean of information which is still waiting to be found out. So I decided to make it a trilogy. So the interesting part of the subaltern freedom movement is that it predates the mainstream freedom movement or the reported freedom movement. It dates back to the early 1780s, and why Birsa Munda is important, or why I started it. Birsa Munda is somewhere, right in the middle of that tribal freedom movement, which started in the early 1780s and went on till about 1940. So he encapsulates some features or some characteristics of the earlier warfare, which was largely focused around guerrilla warfare of Tilka Maji in the early 1780s. And at the same time, post Birsa Munda revolution, a lot of changes happened. For example, the main antagonist of Birsa Munda's story was a missionary by the name of Father Hoffman. And in fact, Birsa Munda's time was the time when, apart from the feudal hardships or the financial subjugation which the community was being subjected to, conversions became one of the main weapons of the Britishers. So post Birsa Munda's revolution, in fact, the person he fought his agitation or he fought his revolution against, Father Hoffman, he was the person who was instrumental in convincing the Britishers to bring in a landmark reform which went by the name of Chota Nagpur Land Tenancy Act, which actually gave. So I think, even for the Britishers,
a revolution of the magnitude of Birsa Munda's revolution was a big eye-opener, and it impacted the politics of at least that region, the eastern region, during that time. Thank you so much. बिरसा मुंडा और बल्कि हिंदुस्तान में लगभग 1763 सन्यासी फकीर विद्रोह के साथ, हाँ, सन्यासी फकीर विद्रोह के साथ एक तरह से आज़ादी का जो संघर्ष है वो हमारे यहाँ चालू हुआ। और इसमें वो सारे लोग थे जो ब्रिटिश सेना से हटा दिए गए लोग, किसान, मजदूर, जनजातीय समाज के लोग, है ना। तो मूसा अली, देवी चौधरानी, चिराग शाह, मजनू शाह एंड बिरसा मुंडा, बाबा तिलका माझी। तो ये बड़ा एक तरह से विस्तार है। और लगभग जो मेरी जानकारी है या जो मैं देख पाया कि लगभग 61 आंदोलन हैं जो जनजातीय समाज के द्वारा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, जमींदारी प्रथा के सुधार के लिए, जंगलों के पर्यावरण के सुधार के लिए, जैसे एक बड़ा नारा उस वक्त प्रसिद्ध हुआ कि तुम एक पेड़ काटोगे हम एक सर काट देंगे। तो दुनिया का ये सबसे शायद आधुनिक नारा पर्यावरण की रक्षा के लिए भी है। और जैसे तिलका माझी के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी उनने काम किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बिरसा मुंडा हैं, बिरसा मुंडा को या जो जनजातीय समाज के जो क्रांतिकारी थे, तो दो तरह के सवाल मेरे मन में हैं। एक कि अंग्रेज़ लगभग 1757 से हिंदुस्तान में काबिज हो गए थे, उनका कब्जा एक तरह से हो गया था। लेकिन जो मुख्य समाज जो है, मेन स्ट्रीम जो है, उसको आते आते 1857 लगभग 100 साल हो जाते हैं। इस बीच में जो जनजातीय समाज के जो आंदोलन हैं, लगभग 61 आंदोलन जो हो चुके हैं या हो रहे थे, उनके बारे में भद्र समाज की कोई बहुत ज़्यादा न तवज्जो थी, न रुचि थी, न समर्थन था, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा क्यों होता रहा? इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो स्वाभाविक है ये मान लेना कि जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, आम तौर पर वो एक कलोनियल माइंडसेट रखते हैं। लेकिन दूसरा जो मैंने अपने रिसर्च में अनुभव किया, दूसरी एक जो लिमिटेशन वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सबॉल्टर्न हीरोज़ हैं, जो जनजातीय हीरोज़ हैं, उनके जीवन काल में उनके बारे में बहुत कम जाना गया था, क्योंकि आमतौर पे आपको पता नहीं था उस रेवोल्यूशन का, वो तो छोटा सा एक विद्रोह था, उसका क्या असर पड़ेगा। Most of these people were written in hindsight. So, like 2 decades after the death of these individuals, the society would wake up to the influence of what they had done. तो जब आप hindsight में आप किसी चीज़ को revisit करते हैं, तो वैसे भी जो प्रारंभिक sources of जानकारी, जो प्रारंभिक sources of information है, वो बहुत सीमित हो जाती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक limitation हो जाता है। बट फिर भी एक आप ही के सवाल से एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि जो आज सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इतिहास को पुनः लिखा जाना ज़रूरी है, वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो किरदार महत्वपूर्ण थे और जिनको बाहर रखा गया था, उनको उनकी उचित जगह मिलनी चाहिए थी। और आइडियली इट शुड हैव हैपेंड 30 years ago, because while I can understand that there was a colonial hangover in the first 2 or 3 decades post independence, this cleaning up should have ideally started by late 70s or late 80s, but it's better late than never. बिल्कुल, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जनजातीय समाज के जो क्रांतिकारी थे या वॉरियर थे, जो भी हम उनको शब्द दें, तो उनको लगभग रिड्यूस कर दिया नंबर्स में। जैसे बिरसा मुंडा के साथ में 200 लोग मारे गए या 2000 लोग मारे गए। यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में टंट्या भील हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, शंकर। इसका एक और कारण आपको बताता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई जो जनजातीय क्षेत्र में लड़ी जा रही थी, वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट थी उससे कहीं अलग थी, कहीं पेचीदा थी। इट वॉज फार मोर लेयर्ड in the sense that most of these tribals were not directly fighting against the Britishers. The Britishers had outsourced the rule in tribal areas to 2 of their offshoots. One was the feudal landlords, and from 1850s onwards, as a very concerted policy, it was through to the German missionaries.
And German missionaries obviously had certain targets. They were given certain targets every year that you need to convert these many Adivasis every year. So the Adivasis' fight against the British was never a direct fight. It was a very complicated fight. Most of the times they would end up fighting up against the feudal landlords, against the missionaries, only to realize in many cases they were not even aware that the main culprit is the Britishers. So in one of the books, the third part of the trilogy that I'm working on, which is on Siddho Kano, the 1855 Santhal insurrection, and which will be out on the day of Santhal insurrection this year, the day when it started, 30th June. For a long time, most of the people who were with the soldiers who were with Siddho and Kano, the two protagonists of the movement, were not even aware that they would face the Britishers. They were primarily fighting against the landlords. So I think these complications make it very difficult to document these movements in entirety. आप इस वक्त कह रहे हैं कि 61 आंदोलन थे, हो सकता है कि वो 600 आंदोलन हो आपको, और ये भी हो सकता है कि उसमें बहुत सारे आंदोलन जो है बिना बात के अज्ञानता में, वो एक जो होता है जब व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसको उकसाना बहुत आसान होता है. गरीबी वैसे भी, जो गरीबी में आप मतलब आपकी प्रोवोकेशन, आप बहुत आसानी से प्रोवोकेट हो जाते हैं, तो हो सकता है वो 61 की जगह वो 20 हो सकता है कि वो 600 हो. But these are the challenges one faces when one documents subaltern history, and especially many decades after the movements actually happened. ये तो बहुत अच्छा है कि कम से कम जो हिस्ट्री रिटर्न फिर से लिखने की जो बात है, तो कम से कम 2020 में ही सही. और यही चैलेंज मैंने भी फेस किया था. देखिए, ये तीनों किताब की रूपरेखा अलग है. तो जब बिरसा मुंडा पे हमने काम करना शुरू किया, I realized that, you know, the kind of evolution his life went through every 5 years. For example, at one point of time he got baptized because that was the precondition for him to get converted, to get admission into a missionary school. Then he shunned Christianity, came out of it. The same villagers, the same people in his village who were looking up to him कि ये तो पढ़ लिख कर आएगा वापस और हमारी community का नाम रोशन करेगा, या the same people shunned him, and eventually he spent 4 years in wilderness. When he re-emerged as a spiritual healer. तो इतना कुछ था बिरसा मुंडा के जीवन में कि मुझे लग रहा था कि इसको अगर मैं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं ला सकूं, उससे बेहतर होगा कि उसको एक नॉवेल के फॉर्म में लाऊं. तो इस वजह से तीनों किताबों की रूपरेखा अलग हो जाती, तीनों कहानियां की. बिरसा मुंडा इज अ नॉवेल. While I have maintained utmost sincerity to the essence of Birsa Munda's character, there is some amount of dramatization insofar as the other characters are concerned. The idea was to make the book reach out to maximum young readers, to make it more and more palatable to the youth, which it has managed to do. With the second book, The Great Tribal Warriors of Bharat, it is a collection of essays essentially, of 17 different tribal warriors from across the country. The third book again, in terms of the depth of the story, the depth of the trajectory of the two brothers, again it's a novel. While we have retained the authenticity insofar as the main protagonist Siddho Kano are concerned, the other villains, again, जब आपको protagonist के बारे में ही information निकालना इतना मुश्किल होता है, तो villains के बारे में वो Father Hoffman होंगे या वो और ज़्यादा मुश्किल होता है. So we have gone in for a fair amount of dramatization in that story again, and that explains why each book has followed a different pattern. But the main objective is that these stories need to reach out to maximum number of people, and the characters need a place in history which they have been denied. Thank you so much for the very insightful background into the story, which leads me to a couple of questions basically. Absolutely. First and foremost, you mentioned a very important thing, that the motivation behind this and what it was leading to was basically to create a subaltern perspective, a history that was alternate to the dominant one that was presented about the tribal warriors. So my first question to you would be, how can you envision your books contributing to this newer sort of way of writing history? See, books are the foundation today, and interesting stories get converted into audiovisual medium. So in fact, Birsa Munda was acquired by Viacom, the parent company of Colors. At one point of time, we were almost certain that it was supposed to come on air as a mega historic series starting on his birthday on 15th November, the previous. But then due to the huge COVID period, the ad revenues of many channels have gone down, and for any massive budget show,
they have kind of postponed their immediate plans. So that is, so books are merely the foundation. The idea eventually is to convert the same into children's narrative. So in fact, going ahead from here, I would want to bring out each of these books into a children's series. And in fact, with the new education policy making a clear provision for inclusion of such books in the course curriculum, I think there is a huge market where standard 4 to standard 6 students can grow up reading these stories. So I think the scope is enormous, and that is why the first thing to do was to write these books, and which I have started with. Thank you. So, which also, there's a connected question with that. You mentioned that, when you were dramatizing the character of Yeah. Birsa Munda, one of the biggest challenges was the lacuna in, documents basically on their lives. And as you also said, these are real life characters. So, are real life people also. So, how did you go about, collecting maybe the archives, or how did you experience that kind So of research? 3 ways. One, we have utilized all information available on public domain. We have referred to all history books. There are 2 books on the credible books on the life of Birsa Munda which I could come across, and both of them were written about 30-40 years ago. One was written by an IAS officer who has been a collector in some of the districts where Birsa Munda's revolution took place, K.S. Singh. I refer to his book, I refer to another book, plus, like I mentioned, all information. Plus, I spoke to a couple of people from the Munda community, including Kariya Munda, who has been one of the oldest serving Munda MPs. So, like I said, but this information had to be assimilated into a form that I wanted to give to the book, which is a slightly storytelling form, which is a slightly novel adaptation form, which is what it is eventually. Okay. Thank you, sir. क्योंकि ये बहुत गंभीर और जोखिम भरा काम है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो हुआ है कि सोसाइटी में जनजातीय समाज के लोगों को एक मानवीय पहचान पाना भी बहुत मुश्किल रहा है, जो अभी बीच में धीरे धीरे करके वो पहचान बन रही है। तो उनके बारे में जैसा कि मैं बात कर रहा था कि उनका जो योगदान है या उनका जो सेक्रीफाइस है, उनकी जो सफरिंग है, उसके बारे में डाटाज मिलते नहीं हैं। मैंने सरकारी रिकॉर्ड में भी, आप गजेटियर में जाएं या दूसरी तरफ से जाएं, तो भी वो बहुत सीमित जानकारी मिलती है। और अक्सर ये होता है कि जैसे कहा कि बिरसा मुंडा के साथ इतने लोग शहीद हो गए, अब कितने लोग थे, कौन थे, या टंटा भील के साथ हुआ, या और तिलका माझी के साथ हुआ, या शंकर शाह, रघुनाथ शाह के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं। और ये संयोग की बात है कि पिछले 15-20-25 साल में ये नाम निकल के आने भी लगे हैं, क्योंकि 1857 के बारे में जब बात होती है, मतलब ये देखिए कि वो सारे जो लोग जो एक तरह से असहिष्णु रहे हैं जनजातीय समाज के साथ, जो बात की गई 1763 में ये विद्रोह का सिलसिला चालू हो जाता है और लगभग वो 1857 तक हो जाता है। तब जाके जो जमींदार हैं, राजा महाराजा हैं, या और जो भद्र समाज है, तब वो जाके निकलना शुरू करते हैं, है ना। बहादुर शाह जफर आते हैं, सब आते हैं, लेकिन उनकी जानकारी मिल जाती है। सावरकर उनके बारे में तो 1857 पर लिख देते हैं, लेकिन जनजातीय समाज के जो वारियर हैं उनके बारे में समाज को लगभग 2020 तक या 2010 तक इंतज़ार करना पड़ता है। ये चिंता की बात भी है और खुशी की बात भी कि चलो अब तो हो रहा है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, कितने लोग मारे गए या ऑथेंटिसिटी, मेरे ख्याल से वो एक ऐसा सवाल है जिस पर कि हम लाख चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वन एडवांटेज विच आई हैव इज, because I have been politically active, I keep raising these issues on all forums. जैसे बिरसा मुंडा की कहानी जो है किताब में निकलने के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए। दुम्बारी बारू एक मेमोरियल है रांची के पास, खूंटी ज़िले में 30-40 किलोमीटर दूर है, 40-50 किलोमीटर दूर है रांची, जहाँ बिरसा मुंडा की आखिरी लड़ाई हुई थी, जहाँ लगभग 300-400 आदिवासी शहीद हुए थे। क्या वो भारत की जनजातीय समाज द्वारा लड़े गए सारे युद्ध या सारी लड़ाइयों में शहीद जनजातीय योद्धाओं का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल बन सकता है?
ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने तरीके से बीच बीच में उठाता रहता हूँ। बिरसा मुंडा का गांव सिद्धो कान्हो का गांव आज साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो उत्तरी झारखंड में आता है। बिरसा मुंडा का गांव जो है वो उलीहातू या वो दक्षिण के झारखंड में आता है। दोनों की दूरी 400 किलोमीटर। क्या एक नेशनल हाईवे बन सकता है जो दोनों के गांव को कनेक्ट कर सके? मेरे ख्याल से ये जो है नैरेटिव को इस तरह की बातें जो हैं और बढ़ाती है। और मेरे ख्याल से आज ये क्षेत्रीय आइकन्स नहीं रहने चाहिए। ज़रूरी ये है कि अल्लूरी सीताराम राजू, जो हालांकि ट्राइबल थे नहीं लेकिन एक राजपूत थे, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन जो है ट्राइबल्स के लिए लड़ने में समर्पित की। अल्लूरी राजू आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते थे। क्या बिरसा मुंडा की कहानी अल्लूरी राजू के गांव में प्रचलित हो सकती है, सुनी जा सकती है? और वाइस वर्सा, क्या अल्लूरी राजू की कहानी तांत्या भील के गांव में सुनी जा सकती है? तो मेरे ख्याल से ये एक और बड़ा चैलेंज है कि इनको क्षेत्रीय आइकन्स तक हम सीमित ना रखें। जब मैंने ये पुस्तक लिखी और रांची में पहला लॉन्च हुआ था, तो मुझे वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने बताया कि ये तो एक समय सिर्फ 3 जिले के आइकन्स माने जाते थे, आज पूरे देश के माने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यही एक चैलेंज हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि तांत्या भील की कहानी, क्योंकि इश्यूज सेम थे, एंड इवेंचुअली इट्स अ विक्ट्री ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट स्टोरी। Today's Birsa Munda need not be a revolutionary. He could be somebody who brings in a digital revolution, or tribal who decides to bring in a digital revolution in his village, and who fights against odds and makes it a success. तो आयाम बदल गए हैं, चुनौतियां वही हैं, और मेरे ख्याल से eventually most of these stories are essentially victory of human spirit stories. So to the Okay, thank you so much. Now the session is open for question and answer. किसी को अगर प्रश्न पूछना है तो प्लीज। इतना पैक्ड हाउस देखकर अच्छा लगता है, तो मुझे लगा बहुत सारे सवाल होंगे। जी लक्ष्मी जी। मुझे किसी ने कहा था, इन लाइफ देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। तो मैंने इसलिए कहा, मुझे किसी ने कहा था और मैं मानता हूँ उस बात को कि इन लाइफ देयर आर ओनली नहीं, इन लाइफ देयर आर ओनली इंटरप्रिटेशंस, नो फैक्ट्स। सॉरी, मैंने गलत कहा था। तो अगर आप जितनी भी ऑथेंटिकेटेड माने अपनी हिस्ट्री बुक को, क्या गारंटी है कि वो ऑथेंटिकेटेड है? आप उस युग में तो वापस नहीं जा सकते ना। ज़रूरी ये है कि जो मैसेजिंग है वो कायम रहे, जो अच्छी बातें हैं समाज के लिए वो निकलती रहे, और थोड़ा सा 18-19-20 18-20 या 19-20 होती है कहानी, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर पड़ती है, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू द एसेंस ऑफ द कोर कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट। तो भगवान राम, अगर आप रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम की कैरेक्टर का एसेंस को बरकरार रखते हुए अगर आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन सुग्रीव के कैरेक्टर में कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि उससे रामायण को कोई क्षति पहुंचती है, या उससे रामायण की जो प्योरिटी है वो समाप्त होती है। रीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, जानें इन कहानियों को, अपने तरीके से इंस्पायर हों उन कहानियों से। We had another question from the back. अच्छा, we'll take. कहानियाँ सुनाई देती हैं, उसको आप कितना ज़्यादा तवज्जो देते हैं? और क्योंकि जहाँ डेटा एग्जैक्ट नहीं है, ये लोग जो इनके धार्मिक विश्वास है या उससे जुड़ी जो कहानियाँ आप बताते हैं,
तो आप उसको कितना तवज्जो देते नहीं, हैं? एज अ राइटर मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि वन हैज़ टू हैंडल दीज इश्यूज इन अ वेरी डेलिकेट मैनर. जैसे आदिवासी समाज में और विशेष तौर पर झारखंड में एक बड़ी समस्या है. एक बिल वहाँ की सरकार ला रही है सरना धर्म को लेके. वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुले बयान देते हैं कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं था और ना कभी रहेगा. तो ऐसी स्थिति में what does one do as a story writer? I have played it safe. मैंने एक रिसर्च पेपर को एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हुए 1800 पेजेस का एक रिसर्च पेपर है जिसमें शिव का पूजन जो है, भले आदिवासी अपने आप को जो कहें, मैं मानता हूं कि वो सनातन धर्म के हिस्से हैं, अभिन्न हिस्से हैं. करिया मुंडा जी जिनसे मेरी डिटेल में बात हुई है वो भी यही मानते हैं. लेकिन कम से कम शिव की पूजन जो है वो तो मतलब उसका प्रमाण है कि आदिवासी पिछले 2000 साल से कर रहे हैं. तो जो अपनी राइटिंग में मैंने उनको शिव की पूजन करते हुए दिखाया है, बियॉन्ड दैट दे आर नेचर वर्शिपर्स, वो भी दिखाया है. सिंगा बोंगा वहाँ माइक दे दीजिए आप प्लीज, ताकि सब आपकी बात सुन पाए. जितना मैंने बात की है आदिवासी समाज के लोगों से, उनका ये मानना है कि जो उनके आदि देव हैं, हम उनका फॉर्म दूसरा हो सकता है लेकिन वो अपना आदि देव जो है वो शिव और पार्वती को ही मानते हैं. और बड़ा देव के रूप में भी कुछ जनजातियां उनकी पूजा करते हैं. जो लोग भ्रमित कर रहे हैं समाज को, उनके खिलाफ हमें अपने तरीके से नैरेटिव बनाना पड़ेगा. जो मैं आप पढ़िए बिरसा मुंडा को बहुत उसमें संवेदनशीलता के साथ और बहुत चतुराई के साथ शिव का पूजन भी दिखाया गया है, सूर्य पूजन भी दिखाया गया है. सरना जो पेड़ माना जाता है वहाँ भी आदिवासी अपनी पूजा अर्चना करते हैं, वो भी दिखाया गया है. जी. और एक छोटी सी टिप्पणी करें, अगर आप कन्वर्जन पे जो चल रहा है इसमें बहुत तेजी से, वो एक अलग विषय, बट कन्वर्जन इज एन एज ओल्ड प्रॉब्लम, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एवरीवेयर. आई थिंक देयर शुड बी स्ट्रिक्टर लॉज, बट predatory proselytization is a bigger issue which should stop. I'm Meera Das. Yes, ma'am. Just very small question. ये क्वेश्चन ये है कि आपका जो भी सोर्स है, वन आई कम्प्लीटली सपोर्ट कि इनके बारे में लिखा जाना चाहिए, और ये हमारे सपोर्ट कि इनके बारे में लिखा जाना चाहिए. These are the heroes from our ground, from our earth. लेकिन जो भी आप लिख रहे हैं वो मिथ के रियलम, इट शुडंट बी अ लेजी हिस्ट्री. लेजी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, रिसर्च पक्की होनी चाहिए, बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ से आप रेफरेंस ला रहे हैं उसका रेफरेंसिंग करना चाहिए. और जो आप रेफरेंसिंग नहीं कर रहे हैं, किसने क्या बोला, ये आपने कौन से टेक्स्ट से कहाँ से उठाया, लेजी हिस्ट्री जो है ना उससे माइंडसेट भी नहीं बदलेगा. उससे आप being a lazy history is an assumption. लेजी हिस्ट्री इन द सेंस कि आप उसको रिफ्यूट करिए, आपने जिस जगह से उसको लिया है. But I think you're being presumptuous by calling it lazy history. Because I'm not making any comment on your this thing, but I clarified that right at the start, that realizing my limitations, because I'm not a professional historian, I took the extra care to bring Birsa Munda out in a novel form, which is very extremely appreciable, and this is, I'm so glad that you mentioned it कि हम ये novel के form में लिख रहे हैं. But आप जहाँ उसको I mean I'm just making a statement, I'm no comment. But वहीं दूसरी ओर the second book of the series is a collection of essays in a non-fiction form, because of everything, you know, the source material is clearly mentioned towards the end. And I quite appreciate that you have taken up a very difficult subject. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Next question, please. Yes, please raise your hand. Yes. Yes, sir. I have one thing in mind. Sir, please keep mic close to your hand. All these tribal myths, if internationally if we collect and then we decode it into modern times, then I think we'll find that there are some commonalities there, and that commonalities is basically very human, because the human race has evolved when the post era of the civilization, when the man has come from the caves, and then he became, if we call it them, the tribal. So they have a very, very good understanding and survival system among themselves. Like when they take a decision, I was going through the Golden Bough,
they say that if two conflict is there between the two groups, they say that okay, we can take the decision that in the seventh generation, what will be the best for the whole, both the groups, and then they reach, and they decode it. This is such a this thing. It is revealing to me that see they were able to solve their problems, and in this modern society we are not able to solve the problems. So, No, so in fact, taking these books ahead, one of the ideas which I'm working on is leadership lessons from the tribal communities and the leaders. So yes, today I went briefly for the Bhopal Heritage Walk, and I was very fascinated to know that apart from Raja Bhog, apart from the Begums, Bhopal also has a rich history of Gond rulers, which is a tribal community. So I think the contribution of the community is phenomenal, and to typecast them in any one manner would be very limiting. But yes, I think Bhopal should take the lead in being the epicenter of fresh research and fresh evolution of study material around the community. Okay, great. Thank you so much, तुहिन जी, अनंता जी और श्रीराम जी. जोरदार तालियां होनी चाहिए इन दोनों तीनों के लिए for that amazing discussion. Thank you very much. It was lovely to see such a involved, such a passionate audience, and I look forward to being here more often. And we look forward to having you as well. Thank you, ma'am. मैं मीरा दास जी को बुलाना चाहूँगा मंच पे in order to present a memento on behalf of the Bhopal Literature and Art Festival as a symbol of love and respect from our team and for the amazing discussion that we have had. और इतने सन्नाटे के साथ नहीं, मुझे लगता है तालियों के साथ बेहतर लगता है. Yes, there it is. Thank you so much, Tuhin ji, for being a wonderful torchbearer of this session on the tribals. Give a big hand, ladies and gentlemen, for the author, Tuhin A Sinha ji. And of course, along with the author, the two wonderful discussants जिन्होंने इस डिस्कशन की नाव को आगे बढ़ाया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सामने इस डिस्कशन को पेश किया, Anandita Pal ji and Shriram Tiwari ji. Yes, जोरदार तालियां होनी चाहिए. Anandita Pan ji and Shriram Tiwari ji along with that. And for those who have joined us recently, let me tell you this picture जो आप मेमेंटो पर देख रहे हैं, it's the picture of a highly endangered bird called lesser florican, which is found near Indore, Sirpur, and it was captured by Padma Shri Bhalu Monde ji, जो पहले दिन से हमारे साथ बने हुए हैं as a guest at the BLF, जिनका exhibition भी ज़रूर आपने देखा होगा, खूबसूरत तस्वीरों का exhibition. And there it is, the lesser florican, the beautiful bird, unfortunately getting endangered. So this was the last session, पर ये अंत नहीं है. कहते